Hello children, welcome to Spark Physics by Ashish Sharma sir, the easy and simple way to learn the concept of physics. I am back with a new video, with a new topic, torque, under the heading electrostatics, which is your first unit. So it is the torque on a dipole in a uniform electric field. What is electric dipole? Nothing but the arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance. We have taken an electric field which is shown by black color thick lines. You can see the direction of electric field is this. We have kept shown in the red color minus q and plus q. This is the electric dipole. Separation we always take 2a. The electric dipole moment's direction always from minus q to plus q, which is in this direction. तो जब ये फील्ड E है और डायपोल को हमने उसमें रखा तो ये plus q and minus q will experience the force. We have electric field is equal to force by charge. So force is equal to q into E. So the force exerted on plus q charge will be equal to plus qe, where it is along the direction of E. Similarly, the force exerted on minus q charge equal to minus qe. This is opposite to E. इसका direction opposite है. So therefore, net force on dipole, how much? Plus qe minus qe, अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, यू विल गेट 0. फोर्स 0 हो गया, बट दे आर इक्वल एंड अपोजिट. सो देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल विच विल एक्सर्ट टॉर्क ऑन द डायपोल. दोनों कैसे हैं? इक्वल एंड opposite. So therefore they will form a couple and hence exert torque. Torque क्या करता है? What is torque? In class 11 we have studied rotational effect of or the turning effect of force, right? तो इस डायपोल को ये फोर्स यहाँ लगा रहा है, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये वाला एंड क्या करेगा? इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला इधर खींचने की कोशिश करेगा, and you will see that they are trying to align the dipole in the direction of electric field like this. ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा? Therefore torque, what we have, either force into perpendicular distance between the forces. So we have tau is equal to qe into, दोनों का सेपरेशन कितना है देखिए, what's the separation? 2a sin theta into 2a sin theta. So we can write torque is equal to q into 2a will give you p. So we have p sin theta. This is the expression for torque. बहुत आसान है. Total force 0, therefore they will exert torque, form a couple which will exert the torque. And torque हमको मालूम है either of the force into perpendicular distance. दोनों में से एक force क्या है? QE, perpendicular distance 2a sin theta. You will get 2a into q will give you p, so it is p sin theta. In vector form, what you can write? Torque is equal to p cross E. How will you get its direction? कैसे मिलेगा? Right hand screw rule. कैसे? When we rotate this dipole like this from P to E like this, screw will advance inside. तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा. ठीक है. Case 1, if we take theta to be 0, torque will be 0. क्यों? क्योंकि ये डायपोल है, ये 0 हो गया, मतलब ये ऑलरेडी इट इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले से ही अलाइंड है, तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऑलरेडी वो आ चुका है.
What about theta 90? Sin 90 1, so you will get P, which is the maximum value or maximum torque. मतलब जब ये ऐसे 90 डिग्री पर रहेगा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम. ऑब्वियसली उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा रोटेट करने के फोर्स लगाना है, राइट. सो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क. So now we have tau is equal to P sin theta. If we take E is equal to 1, E is equal to 1 and theta 90 degree, so we can have P is equal to torque. That means we can define dipole moment, electric dipole moment from this expression. Which one? This expression. हमने E की वैल्यू 1 ले ली, थीटा 90 ले लिया, तो P कितना आ गया? टॉर्क के बराबर आ गया. तो हाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ. राइट? होप इट इज क्लियर टू यू. This finishes with the torque. Thank you everyone for watching the video till the end. Please don't forget to like, share and subscribe. Okay? Thank you very much.